So, good evening once again. My name is Maurya Hanspal, and in this session, we're going to talk about technical analysis, session number two. Okay. So, now why this session has been named as technical analysis, session number two? Because I've already taken the session one on technical analysis, and that is available on the YT series only at College Dekho. Okay. So, in the first session of technical analysis, we tried to understand the basics of technical analysis and also try to touch upon the some tools of technical analysis. But on this series of technical analysis, which begins from technical analysis session number two, I'll be talking about each and every tool in quite detail, rather than just covering these tools for namesake. Okay, so let me recall in brief of what we talked about in the first session of technical analysis. In the first session of technical analysis, we tried to understand the difference between technical analysis and fundamental analysis because both of them are different. Technical analysis is for a shorter term period when you want to trade, and technical analysis can sometimes also be based on speculation, but not always. You need to have understanding of all the theories, tools, indicators being used in technical analysis. If you have no knowledge about all these tools, I would kind of advise you not to trade in market for a shorter term. Avoid trading, because trading, apart from having you make like a large amount of profits, trading can also lead you towards the path of losses as well. And the quantum of losses that one person incurs in trading is far more than the profit he makes. So in order to undertake the whole process of technical analysis, which involves trading and speculation, you must have knowledge of all the tools and indicators used in technical analysis. Otherwise, it would just be a lost journey for you. Whereas if you have knowledge of technical indicators and tools, a large amount of profit can be made even in a single day as well, a 6 digit or a 7 digit figure as well. So we tried to understand the differences between technical analysis and fundamental analysis. As I talked about, technical analysis is only for a short term period, that is for the purpose of trading. Whereas fundamental analysis is for a longer term period, that is for the purpose of investment. Again, you need to pick up strong stocks as well. So, technical analysis, which I've already talked about before, it is based on behavioral finance or financial psychology or different kinds of knowledge that people have. Because if I am predicting a 20% return from the market in the year of 2022, it might also happen that you would not predict 20%. Someone might predict 10%, someone might predict 5%, 15%, 30%. So these ranges can vary. It depends only on the understanding of the market, which differs from one person to another. Someone might be a trader, someone might be an investor. Someone would like to purchase the stocks of pharma industries and IT industries only because they performed well in the past. But someone would love to play on cyclicals, be it your real estate, be it your heavy industries or capital goods industries, right? Whereas someone would have more faith in a kind of defensive industries like fast mover consumer goods or materials industries. Okay, so these things can defend, or it can like differentiate from one person to another. One person might feel that only the metal industry, the IT industries, or the pharma industry can give him return because those industries have performed in the long run and well as well. Whereas some might think that these new age businesses, the tech businesses, or the loss making companies who are being listed in the market can perform well. So these assumptions can differ from like one person to another on the basis of your like financial background or your technical understanding of the market or fundamental understanding of the market or behavioral finances. Some people hold stocks in their portfolio which are not performing well. Why? Because they have performed over the years. Those are large cap, strong companies, the top market capitalized companies who have performed well in the past and reached a stage of maturity. Because their grandfathers, their parents, they used to hold that companies.
like Tata, Reliance, Thapar Industries, and all those industries. Whereas some people believe in investing in emerging themes, be it your tech theme, be it your healthcare theme, the new tech healthcare theme, be it your EV theme, or hydroelectricity, or renewable energy, or clean energy, or pet care industry. So, on one side, one is investing on those traditional and mature industries because they have survived over the years. They have survived over the cyclicities of the market. Whereas, on other hand, there are few people who believe that the emerging themes can give a good return in their portfolio. Whereas some people think that IT and pharma are the only stocks or industries that can perform well, right? So this is all based on your like behavioral finance or financial psychology. Again, there is like one set of people who try to understand the market and then invest in market. Whereas there's some kind of people who work on hearsay, on herd mentality bias. That if someone says them that this particular stock or industry is performing well, or this particular stock or industry like will perform well in future, they will tend to buy those industries because their friends or family members said them to do. But they won't analyze that industry or that stock in detail. It can also happen due to lack of time, but it is much more like beneficial to invest at a later point of time with a huge knowledge of stock markets or that particular industry in which you are investing, instead of blindly investing in industries where you know nothing. So if you are investing on like 1st January 2022 and you have like particularly you have no knowledge about markets or stocks, try investing on 1st February or 1st of March 2022. At least gather some 2 months knowledge on stock market, some basic knowledge, so that you people can invest in a particular stock or industry. It is better to gain much less or in a smaller quantum as to lose in a larger quantum. Okay, so first try to analyze the market. Though everyone says we try investing in market as soon as possible, but no one says invest in market as soon as possible once you have knowledge about stock market or that particular stock or industry in which you are investing into. Because even a large amount of people have lost their hard earned money in the stock market. So firstly, you need to analyze and understand the market in detail, be it fundamentally or technically. So that is one thing you need to understand about the markets. Okay. And being a technical trader, which a large number of people have turned them into a profession, and the income that is earned through trading is nowadays charged as a business income because a large number of people have made trading as their business. They have knowledge about all the tools, traders. So you people can also become a technical trader after having knowledge of all the tools and indicators available in the market. Okay, so that one thing you need to understand. So when we talk about technical analysis, the one tool that comes in mind is the trend line, right? And that is the first tool for which we're going to talk about, a trend line. Trend line, as the name suggests, it is basically showing you a trend in the market. The market ja kahan rahi, right? Like for example, you might have seen such patterns in the market. Such patterns. And these are nothing but the stock prices. Stock price pehle yahan pe tha. And like this is the closing stock prices. And this is the closing stock price for some other period. And this is the closing stock price. तो जब हम trend line की बात कर रहे हैं, तो make note of one thing, we're just talking about the closing prices of the stock and not the opening prices, just the closing prices. ये हो सकता है कि day 1 का closing ये हो, then day 2 का closing ये हो, day 3 का ये हो, day 4 का ये हो, ठीक है? ऊपर नीचे तो मार्केट जा रही है, बट वन वे एक चीज हम बोल सकते हैं, ओवरऑल द मार्केट इज एन अप ट्रेंड, राइट? बिकॉज ओवरऑल तो ग्राफ बढ़ रहा है ना, माना यहाँ से ऊपर हुआ देन नीचे हुआ, फिर ऊपर हुआ लाइक फिर नीचे हुआ, ठीक है? लाइक देयर इज लाइक वोलेटिलिटी इन द मार्केट, बट ओवरऑल फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम द मार्केट हैज रिजन, द ट्रेंड लाइन इज राइजिंग, सो इट इंडिकेट्स एन अपवर्ड ट्रेंड. तो इस पे अ लॉट ऑफ टेक्निकल चार्टिस्ट, उनको हम चार्टिस्ट भी बोलते हैं, all those technical traders or chartists, they believe that the market is going to rise in future as well, because the trend line is indicating an upward trend, and this is an upward trend.
बट दिस माइट नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू। हो सकता है कि उनको लगे कि इसके आगे भी मार्केट बढ़ेगी। मान लो यहाँ पे था, देन ये फिर नीचे आया। अब टेक्निकल ट्रेडर्स को लगेगा कि मार्केट ऊपर हो रही थी, देन नीचे, देन ऊपर, देन नीचे, बट ओवरऑल तो बढ़ रही है, तो यहाँ से भी मार्केट बढ़ेगी ऊपर यहाँ पे। बट इट कैन हैपन, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप it goes completely down and it crashes. Okay, so technical trading will not always give you money. Okay, because trend तो बोल रहा है कि upward trend है, it can help you in like 60% of the cases or 70% of the cases कि अगर overall trend ऊपर है तो ऊपर ही जा रहा है। but some bad news can come here। मान लो कि कंपनी की like कुछ, मान लो कि bad news आ गई कि the company like is into fraud, okay, or there is some insider trading, so market will take a correction and that will be a fall for the market or maybe the stock. So these things can come up anytime in the market. तो अपवर्ड ट्रेंड तो बता रहा है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो बिकॉज मार्केट तो बढ़नी है इसके आगे। फिर अगर मार्केट लाइक करेक्ट होना स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या बेसिकली कि मार्केट ऊपर बढ़ी, देन मार्केट नीचे गिरी, एंड यू कैन नॉट लाइक प्रिडिक्ट दिस अप ट्रेंड लाइक ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू डेज। मान लो सिर्फ इसके बेसिस पे तो मार्केट को नहीं कर सकते तुम प्रिडिक्ट, सिर्फ इन दोनों के बेसिस पे भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3-4 होने चाहिए। तो 3-4 से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है कि मार्केट ऊपर हो रही थी, देन नीचे गिर रही थी, देन उससे भी ज्यादा ऊपर हो रही थी, देन नीचे गिर रही थी, देन उससे भी ज्यादा। तो इट इज बेसिकली फॉर्मिंग व्हाट, हायर टॉप्स और हायर हाइज, यू कैन से द मार्केट इज फॉर्मिंग हायर हाइज, राइट? higher highs is being forming in the market and lower lows obviously। अगर तुम्हारा market trend, I'll just draw this line once again in a clean manner, yeah, ऐसे ऐसे, then ऊपर बढ़ा, then इससे ऊपर, then इससे ऊपर, then इससे ऊपर, तो market is rising and overall एक upward trend है। so it is higher highs and lower lows, higher highs and higher lows, sorry, higher highs and higher lows वाली market है, क्योंकि this high is much higher than the previous high, this high is higher than the previous high, even this low is higher than the previous low, this low is higher than the previous low। तो सिर्फ दो के बेसिस पे तुम नहीं कर सकते प्रोडक्ट, एटलीस्ट यू शुड हैव अ पैटर्न ऑफ एटलीस्ट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब तुमको लगा कि 3 बारी ऐसा हुआ है, 3 बारी लाइक ऊपर नीचे हुआ है, तो चौथी बारी जब मार्केट नीचे आएगी, यू विल फील अब मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हो रही है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस पैटर्न जब मार्केट जब करेक्ट हो रही थी तो उससे भी तेज ऊपर हो रही थी। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट गिरी तो मार्केट बहुत हाई पे हुई एंड दैट वाज हायर देन द प्रीवियस हाई। जब मार्केट यहाँ गिरी एंड पीपल स्टार्टेड बाइंग हियर, व्हाई? बिकॉज पीपल न्यू कि पहले जब मार्केट गिरी थी और उसके बाद जब मार्केट ऊपर चढ़ी, सो दिस हाई वाज हायर देन द प्रीवियस हाई। तो वो बोलेंगे कि अब मार्केट गिर रही है, तो अब जब हाई होगा दैट वुड बी हायर देन दिस हाई, देन अगेन बाय। अब फिर नीचे आया, नाउ दे विल से विल बाय अगेन, देन फिर हाई, राइट? दिस इज एन अप ट्रेंड में तुम बाय कर रहे हो बेसिकली। तो हो सकता है कि अगर यहाँ पे आके मार्केट यहाँ हुई, देन फिर ऊपर हाई गई, देन यहाँ हुई, देन फिर ऊपर हाई गई, इट कैन ऑल्सो हैपन सम डे इट कम्स डाउन, इतना नहीं पूरा ही, एंड लॉस ही लॉस हो गया। सो अप टिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इज फाइन, ठीक है? सो दिस इज एन अप ट्रेंड, एंड व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एन अप ट्रेंड कि मार्केट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंड यू आर स्टिल लाइक मतलब कि पुटिंग योर मनी, आइडियली लोग बोलते हैं कि जब मार्केट जब गिर रही होती है, ठीक है, देन थोड़ा पैसा डालो, बिकॉज बाय लाइक व्हेन द प्राइस इज लो। मार्केट गिर रही है, ठीक है, देन पैसा डालो। बट अगर कंपनी स्ट्रांग है एंड मार्केट इकोनॉमी भी चल रही है, तो लाइक व्हाट डू पीपल डू लाइक इन दिस स्ट्रैटेजी, लाइक मतलब कि विच आई टॉक्ड अबाउट, दे आर बाइंग इन एन अप ट्रेंड। ओके, सो दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट कॉल्ड एवरेजिंग, इट्स कॉल्ड पिरामिडिंग। इट इज द ऑपोजिट ऑफ एवरेजिंग। एवरेजिंग में क्या होता है, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, ठीक है, तुम तब खरीदते हो, बट इन पिरामिडिंग इट मीन्स जब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तुम तब खरीद रहे हो, सो दैट इज पिरामिडिंग। बट अगर हम एक उल्टा सिनारियो लें, लाइक इफ वी टेक द ऑपोजिट सिनारियो फॉर दिस,
कि मार्केट वाज हियर, अब यहाँ से द मार्केट इज लाइक going down, then down, then down. Yeah, I'll make it in a better way. The market was at the top. From the here, it is going down, then down, then down, then down, then down. So it clearly shows a downward trend in the market. ठीक है, गिरती जा रही है मार्केट, देखो गिरती जा रही है. तो इसमें क्या हो रहा है, लोअर हाईज फॉर्म हो रहे हैं. इट इज अ लोअर हाई एंड लोअर लो, राइट. हाई पहले यहाँ पे था, फिर हाई कम हो गया. लो पहले यहाँ था, फिर लो इससे कम हो गया, फिर लो इससे कम हो जाएगा, फिर लो, तो लो लाइक इससे कम हो जाएगा. सो व्हेन यू आर वर्किंग इन एन अप ट्रेंड, so that is the pattern of higher highs and higher lows. But when the pattern is going towards a downtrend, market गिर रही है, it is a lower high and lower low, and that is not a good indicator for the market. अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, they undergo with the strategy of averaging. एवरेजिंग का मतलब क्या है कि मार्केट कम हुई, देन थोड़े और स्टॉक्स खरीद लिए. मार्केट और कम हुई, देन और स्टॉक्स खरीद लिए. मार्केट और कम हुई, देन और स्टॉक्स खरीद लिए. ताकि तुम सस्ते पे तुम खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो. बिकॉज कभी तो मार्केट ऊपर चढ़ेगी, कभी तो ऊपर चढ़ेगी, तो उन स्टॉक्स पे रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज मार्केट सस्ती हो रही है, तुम खरीदते जा रहे हो. मार्केट और सस्ती हो रही है, तुम खरीदते जा रहे हो. और सस्ती हो रही है, तुम खरीदते जा रहे हो. सो दैट इज एवरेजिंग. ओके, सो पिरामिडिंग ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पिरामिडिंग एंड एवरेजिंग. Okay, so what happens in an uptrend? In an uptrend situation, you have higher highs and higher lows, and that is a good situation. And if people are putting more money in an uptrend, कि market ऊपर चढ़ी, stocks और खरीद लिए, market ऊपर चढ़ी, stocks और खरीद लिए, market ऊपर चढ़ी, stocks और खरीद लिए. So that's called pyramiding. But what happens in averaging? It happens in a downward trend, which is called lower highs and lower lows. मार्केट नीचे हुई, स्टॉक और खरीद लिया, मार्केट और नीचे हुई, स्टॉक और खरीद लिए, और नीचे हुई, स्टॉक और खरीद लिए. सो दैट इज एवरेजिंग, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिटवीन द पिरामिडिंग एंड एवरेजिंग. इसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी बोलते हैं इन यूएस. इन इंडिया वी कॉल इट एज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, एंड दिस टर्म इज वेरी कॉमन इन म्यूचुअल फंड्स. कि जब प्राइस कम हो जाता है, ठीक है, तो ज्यादा मतलब कि व्हाट डू वी से, यूनिट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब म्यूचुअल फंड का एनएवी जब गिरता जाता है, बिकॉज इन म्यूचुअल फंड यू हैव एनएवी, जब एनएवी गिरता जाता है, देन तुम्हारे जो यूनिट्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं. So that is a classic example of the averaging or the dollar cost averaging or rupee cost averaging in the Indian context. ठीक है, अब ये हमने लाइक दो ट्रेंड्स की बात करी. That was the uptrend and downtrend. Similarly, you can have a trend which is going in a same pattern. ना ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल सेम ऊपर नीचे से. That is a sideways trend. कि ना तो मार्केट ऊपर चढ़ रही है बहुत ज्यादा, और ना मार्केट नीचे चल रही है. It is going parallel. It's following a basic trend. And what do we call this? We call it as a sideways trend. और फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज में we call it as consolidation. बोलते हैं ना कि market has consolidated. Consolidation, yes. So consolidation is same as the sideways trend. It means the market is going towards consolidation. The market is moving in a sideways trend. It means the market is neither rising nor falling. ठीक है. So if we go into the real market, you have like trading view. So trading view तुम Google पे लिखना, and click on the first option of trading view. So when you click on trading view, go to charts. So when you go to charts, yeah. So first let's delete all this. Yeah. Okay. तो अगर हम एक टाइम पीरियड देखें, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ का टाइम पीरियड देखें, मतलब कि नेस्ले इंडिया का चार्ट है फ्रॉम अप्रैल 2021 टू सितंबर 2021 का पीरियड इफ यू आर एनालाइजिंग. ठीक है, यहाँ से हम देखें या इवन हम यहाँ से देखें, यहाँ से देखें फ्रॉम फेब 2021 to September 2021, and we want to see a trend. It clearly shows an upward trend, and if we join it like this, an upward trend in the market, right? Higher highs बन रहे हैं, ये हाई इससे हाई, ये हाई इससे हाई.
ठीक है, तुम नेक्स्ट हाई मत देखो, लुक एट द ओवरऑल हाइज जो बन रहे हैं, बट ओवरऑल वी कैन सी इट्स एन अपवर्ड ट्रेंड. I'll make it as a line chart. Yeah, it's an upward trend, right? But if we go in the past, like हम कोई ट्रेंड प्रोटेक्ट, ये देखो यहाँ पे भी तुम्हारा एक ओवरऑल एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, ठीक है. बट अगर हम कोई और लें स्टॉक, मान लो इफ we take like Bitcoin for a period of time, या कोई भी हम स्टॉक लेते हैं, लेट्स डू नॉट गो टू ऑल दिस. टाटा मोटर्स भी अगर हम लेते हैं, ठीक है, एंड वी वांट टू प्रेडिक्ट अ ट्रेंड, लेट मी क्लोज दिस फॉर बिटकॉइन. या तो ये टाटा मोटर्स का है. एंड इफ वी गो टू ट्रेंड लाइन अगेन एंड वी ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट से मान लो, तो दिस अक्टूबर 2016 to 1st Feb 2020, and we see the trend line of Tata Motors. So it shows a downward trend, and that is a downward pattern, right? But if this pattern is going on in the same direction, agar na upar ho raha hai na niche, so that's a consolidation. Okay. So in this class, we try to understand the difference between upward trend, downward trend, and consolidation. In the next class, I'll be talking about how to know the support and resistance level.